गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे नए जीएसटी रिकमेंडेशन जो गए हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से जीएसटी काउंसिल की तरफ, उसको समझने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड its impacts on the various sectors, its impacts on the stock which is related to the GST hikes which government trying to do in the next GST council meeting which is on the 21st of December. So in detail में समझने की कोशिश करेंगे कि how the GDP is declining, on the other side the GST is increasing and that is shrinking the middle class and shrinking the consumer class in the India, and which is impacting basically the consumer stocks in India, and the situation is looking very dangerous. Even though the market today is in early hours looking very good, maybe the price is everything is in the price as we say, but we need to see in the longer term how these things are going, because ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने ये भी डिफाइन किया है कि टोबैको के ऊपर टैक्स बढ़ेगा, जीएसटी बढ़ेगी 28% से 35% के ऊपर। एरिएटेड जो ड्रिंक्स है, कोको कोला हो, पेप्सी हो, इनके ऊपर भी स्पेशल 35% की जीएसटी लगाने की मांग हो रही है। कंपेयर टू दैट हमारे जो हाई वैल्यू आइटम्स है, लग्जरी वॉचेस है, सूट्स है, शर्ट्स, टॉप्स है, जो जितने भी हाई लग्जरी एक्स्ट्रा आइटम्स है, उनके ऊपर भी जीएसटी बढ़ने की मांग हो रही है फ्रॉम 18% to the 28%, because companies are very smart who is working in this market of the Indians is like they will pass on this to the consumer। मतलब वो कंज्यूमर को वो पूरी तरह से पास ऑन करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा जीएसटी का चार्ज है वो उनके ऊपर नहीं लेंगे, एंड जिसकी वजह से maybe there is a decline in the sales we can see in the near term, because जब जीएसटी बढ़ेगा तो एक तरफ से आपका इन्फ्लेशन हाई है और एक तरह से जीएसटी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास है वो कोई चीज अगर मान लो कि बहुत ज्यादा तरीके से खरीदना चाहता है, वो अपनी खरीदारी है थोड़ा बहुत पोस्टपोन कर सकता है जब तक ये इन्फ्लेशन के नंबर्स थोड़े से नीचे ना आए। और जिसकी वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ रियल रिटेल इन्वेस्टर्स इज लाइक सेल्स के नंबर्स, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर। अगर ये दोनों नंबर ठीक है तो हमारे स्टॉक अच्छे चलेंगे, लेकिन ये नंबर अगर ठीक नहीं है सो देन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक गोइंग फॉरवर्ड। जैसे आपने देखा है कि इस Q2 में HUL ने भी कहा, नेस्ले ने भी कहा कि देयर इज नो ग्रोथ, वी आर फेसिंग द हेडविंड्स, कंज्यूमर्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। You can take any stock, you can take Britannia, you can take HUL, you can take Nestle. There is all these companies are telling in their con call that they are facing the headwinds in the consumer segment, and consumer segment तभी अच्छा करेगा जब कंज्यूमर जो हमारा मिडिल क्लास है उसके हाथ में पैसा आएगा, या उसका जो जीडीपी मतलब पर कैपिटा इनकम है वो अगर बढ़ेगा, तभी जाके हमारे लिए मतलब एज अ कंपनी रिटेल इन्वेस्टर के लिए फायदा होगा। बिकॉज कंज्यूमरी डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है वो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा कंपनी को फायदा होता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट ऑन द अदर साइड थिंकिंग वेरी डिफरेंटली, because obviously now the government in India is like there is no headwind. Maharashtra elections are over, they got a majority, and the same government is in the power in the central, and now there is a room for the 5 years that the changes they wanted to build in terms of the tax, in terms of the infrastructure, they can do anything, because there is no problem with the government powers to do anything. But the thing is, now they have decided to increase the GST on tobacco from 28% to 35%, which I can understand, because they want more awareness to the people, and they want like, okay, the more taxes on the tobacco related products. But the high luxury items like your watches, your shoes, your tops, your jeans, your any purchase about 10,000 INR will attract the more than I think 28% GST. So which is not a good news, because जो मिडिल क्लास का तबका है, जो हायर मिडिल क्लास बनने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर ही बहुत सारा इम्पैक्ट आ रहा है। बिकॉज कंपनियां जो है बहुत स्मार्ट है, कंपनी विल नॉट बेयर दिस एक्स्ट्रा जीएसटी ऑन देम, ऑब्वियसली दे विल पास ऑन टू द कंज्यूमर। और कंज्यूमर के पास एक तो इन्फ्लेशन का प्रेशर है, एक तो उसका पर कैपिटा इनकम उसकी सैलरी से बढ़ नहीं रहा है, और दूसरी साइड उसके ऊपर जीएसटी का असर है। इन सारी चीजों का असर कंज्यूमरी डिस्क्रिशनरी स्पेंड में होगा, और जिसकी वजह से हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर ने जो कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, उनके जो सेल्स के नंबर है उसके ऊपर आगे जाते हुए उसमें इम्पैक्ट आएगा, और जैसे ही उसमें इम्पैक्ट आएगा स्टॉक की ईपीएस में इम्पैक्ट आएगा, और स्टॉक का ईपीएस अगर गिरेगा तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। एक सिंपल फैक्ट है। So we will try to analyze this one in a very nice way, ki how this is impacting and which are the stocks which you should
be careful, you should have a watchful about this, because ये तो recommendation है जो group of minister ने जीएसटी काउंसिल को भेजा है। जीएसटी काउंसिल हेड करता है निर्मला सीतारमण जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उसको हेड करती है, और वो 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है उसमें वो हरी झंडी दिखाएंगी कि इनमें से कौन से रिकमेंडेशन पारित होंगे, कौन से रिकमेंडेशन पारित नहीं होंगे, जिसको आप यू कैन हैव अ लुक इनटू दिस। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर इन टर्म्स ऑफ लाइक कहां पर कौन से स्टॉक में इम्पैक्ट आएगा, कौन से स्टॉक में you will face some kind of headwinds going forward, and you will see. So hopefully you can able to see my screen now, because there is various windows now to it. So let me share again so you will understand the better way onto this. So first of all, we will try to understand the inflation rates before we go into the GSTs and how GSTs are impacting. So this screen which I have shared is for the India inflation rate. You can see the India inflation rate, which was about approximately 5.4%, 49% in September. Now it is increased to the 6.21% in the October. There is a probability like the November and December is likely to be the same in the inflation point of view. And then there is a projection like in April, May, and the September, this inflation is going to get a decrease on the side. Because why inflations are important? Because अगर inflation कम होगा तभी जाके हमारी जो गवर्नर साहब है शशिकांत दास, he might reduce the interest rate, और interest rate जब तभी reduce होगा तब जाके हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है, हमारी जो बैंक्स है, वहां पर सीआरआर कम होगा, और सीआरआर कम होने से फायदा होगा कि हमारे जो लेंडिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और जिससे ज्यादा बहुत सारी कंपनियों को लोन लेने में आसानी रहेगी, बैंक अच्छा परफॉर्म करेगी। और यूएस में जैसे रेट कट हो रहे हैं, और इसका असर आप देख रहे हो, ट्रम्प की रैली आई और रेट कट यूएस में हो गए, और इन्फ्लेशन भी उनका डाउन साइज पे है, इन्फ्लेशन डाउन है, रेट कट हो रहा है, जिसका असर लिक्विडिटी गश आता है मार्केट में, और लिक्विडिटी गश आने से मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से मार्केट और तेजी से बढ़ता है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इसका सारा इम्पैक्ट होता है। अमेरिका में जो स्मॉल फिनटेक कंपनियां है, दे आर आल्सो डूइंग फैंटास्टिकली वेल ड्यू टू द इन्फ्लेशन। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द हाउ द इन्फ्लेशंस आर piled up in this way, because inflation के नंबर अगर ठीक आते हैं, you can see now in this inflation, it is 5.49 in September. Now the inflation has increased to 6.21, and it is likely to be same till the end of this year. And this is how it has been impacting badly to the people around us. And jiski wajah se, that's also been said by the finance ministers, or sorry, by the HUL and the Nestle, and all these big companies are also showing their data, like how it is impacting to them, and on a large scale. Now I will share something on the other data, which is India's GDP. So GDP and the inflation, these are the two big things which you should look into onto the more way, because that define in a large scale. You can see the India GDP numbers, how they were doing earlier. You can see earlier it is in 2023 in Q4 8.6%. Now it has been declined to the 7.8% in Q1, in Q2 6.7%, and in Q3 it has been declined to the 5.4%. So you can see that there is a decline phase in our GDP. GDP is a rate of change in our gross domestic product. मतलब हमारे देश में कितना growth rate बढ़ता है. There are various sectors which has been determined, like the manufacturing, the agricultural, based on which the GDP numbers has been decided. Now you can see the GDP is been getting hammered over here. You can see there was a pickup from the 2022, because we are also coming from the COVID era. We are coming up.
and now you can see it has been clearly it has been declining phase. So why I'm trying to show these figures, because the inflations are going up, the GDP is going down, and the other side, the government is coming up with this GST. So you think like the GDP will come back to its? No, it will decline again, because you are increasing, you're not giving the money to the middle class or the consumer space guys, but you're increasing more of the GSTs onto the people. So obviously लोगों के जेब से पैसा जाएगा, लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, और इसका असर गोइंग फॉरवर्ड हमारे कंपनियों के ऊपर दिखेगा, and that is already been happening. You can see manufacturing. Last year, what was the number? $7709 billion, billion INR. Now it has been reduced to 6847. That you can clearly see here the the declining phase in terms of the manufacturing. Agricultural also GDP has been declined 6308 to 5320. The you can see the GDP growth rate has also been declined 1.70 to 1.30. The utilities a little bit getting increased, the administrative little bit is in the same way. But however, the mining, you can see the mining INR billion 1004 billion से 916 billion पे ऊपर GDP के numbers थोड़े से decline नजर पे आ रहे हैं. And GDP क्यों is that कि चाइना की जो जीडीपी है वो भी 4.6 से ही बढ़ रही है, लेकिन हमारी अगर इकोनॉमी है वो 5.4 से. कोई बोलेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं है. बाय डिफॉल्ट वी शुड बी ग्रोइंग एट 7 to 8%. जिस तरीके से डेमोक्रेटिक इम्पैक्ट हमारे इस पे है और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर चीजें होती है, तो वी शुड बी ग्रोइंग मच फास्टर रेट. But that is not happening, and that's the very alarming situation now in the days, because if we don't grow ourselves to the level that we wanted, then it is a problem. Because company and I think the government also plays a very important role in this scenario, because if the government is not taking the corrective action into it, and now they are increasing more of the these GSTs and this one, so then I think it's a big concern for this ones going forward. So let me share my another screen where I would like to share onto this GST numbers. Hope you can see my screen. I'm just trying. So you can see on the tobacco, there is GST impact from 28% to the 35%. That is how the GST is been getting hooked to it. And ITC, which has a cigarette contribution of the 44%, and the VST industries and the gold trip lips will get a hit, because cigarette में ऊपर अगर GST बढ़ेगा, that has been passed on to the consumer. Consumer will buy the less cigarette because of the inflation and the GST hikes. Obviously ऐसा मतलब इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन होता है. इसके लिए ITC के ऊपर आप देखो कि 44% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है. VST में कंट्रीब्यूशन आप अगर देखोगे तो वो 90% के ऊपर है. तो this is also an impacting this will impact these three companies on the more way. ठीक है. Now we'll go to the other case of the aerated drinks. So Varun Beverage is the big name in terms of the Pepsi. They are the distributors for the Pepsi in India, and they will also get hit with this GST hikes if that stays onto the 21st December को जो मीटिंग होने वाली है उसमें अगर वो कामयाब हो जाते हैं, तो I think this will impact on the Varun Beverages, United Spirit and the UBL, because the GST has been around like 35% special GSTs on the drink product के ऊपर असर होगा. So I think this will be also impacting. Then your luxury watches will also get impacted, because it has the Ethos, it has Titan, it has Nika. So all these luxury watches, especially the watches which is above 15,000 INR, you will face the GST from the 18 to 28%. In the Raymond, you can see the suits, the shirts and the pants which you buy from the Raymond. So Raymond is very, the conglomerate in terms of the high shirting and suiting items, which is more than 10,000 K, obviously. So the GST will be
will be increased to 18% to 28% as well. So same likes with your shoes. There are shoes which is above 15,000. You will face these Jordan shoes and all. So you will face, I think, the GSTs will be increased to 18 to 28%. So Metro Brands, Bata, and all these shoes companies which you can keep in radar of it. And then, as I said, the high value item, which is the important thing, is your tops, jeans, and the high luxury clothes. So you can see there is a GST will be added like 28% from the items about 10K. मतलब 10K के ऊपर जो items है उसके ऊपर 28% की GST होगी, 18% GST होगी. The items from 1,500 INR to 10K, and the 5% GST will be added to the 1,500 INR items. So clearly you can see all these companies, you can note down all these companies, and you can also, मतलब हमें देखना होगा कि इस कंपनी के कॉन कॉल में आगे जाके हुए Q3 में इसका क्या इम्पैक्ट होता है. We need to see, because these are just initial trends which you will see in today's market on all these companies. Then there are certain companies where you can see the tube investment which manufactures the tubes for the cycles. So exercise bicycle होती है, वहां पर GST कम होने की बात हो रही है. 12% से लेके 5% तक वो GST में रेट कट होने की संभावना है. तो ट्यूब इन्वेस्टिंग you can keep an radar on. There is no buy and sell recommendation, obviously. If you like my videos, then please like, share, and subscribe to this channel, and like my videos. If you have any comment, then please let us know any comments, or let us know and advise me for any of your stocks that you are facing the problems. I'll try to help out with you. So if you like my videos, so please like, share, and subscribe. तो वाटर बॉटल के ऊपर द GST कम होगा 18% से 5% के ऊपर. इसमें आई थिंक यूरोप का फोक जैसी कंपनी है, फ्लेयर राइटिंग जैसी कंपनी है, जिसमें नोटबुक्स जो है वहां पर भी GST कम होने की बात हो रही है. 18% से लेके 5% तक के ऊपर वहां पर GST कम होने की बात हो रही है. ठीक है. सो देयर आर 2-3 segments where the GST is increasing, and 1 or 2 sectors like the insurance and the packaged drinking waters and the exercise notebooks, bicycles and the notebooks, वहां पर GST कम हो रहा है. लेकिन एरिएटेड ड्रिंक्स और द टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, हाई वैल्यू लग्जरी आइटम्स के ऊपर, वहां पर GST बढ़ रहा है. इसका मतलब है कि जो भी बंदा अभी मिडिल क्लास में है, वो अपर मिडिल क्लास के ऊपर जो शिफ्ट होने की बात हो रही है, उसकी जो इनकम थोड़ी सी सैलरी की वजह से बढ़ी है, एंड दे आर ट्राइंग टू बी रिच, दे वांट टू बी लाइक invest in themselves, invest in their clothes and the luxury items. The government don't want that. Government want money from it. So which is very annoying actually, because this will impact the middle class in a way, and this will impact the share market as well. Maybe अभी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसका impact Q3, Q4 और Q1 में 25-26 के इसके ऊपर भी पड़ेगा. So now just going to this insurance sectors. The insurance sectors, you can see for all the senior citizens, they are trying to reduce or like remove the GST, which is a good news. And they also like your term insurance, the term insurance, especially above 5 lakhs, they are trying to reduce or like nil the GSTs. This is into the recommendation zone. जैसे मैंने कहा कि 21 दिसंबर को जो मीटिंग होने वाली है उसमें वो फाइनल कंफर्मेशन आएगा. लेकिन यू कैन कीप रडार ऑन ICICI Lombard, SBI Life, HDFC Life, ICICI Pru and the Max Financial, because all these companies are doing. इसमें से सबसे बढ़िया कंपनी मुझे लगती है वो ICICI Lombard, because उनका बहुत सारा पोर्टफोलियो टर्म इंश्योरेंस के ऊपर आता है, and there is a huge demand nowadays on the term insurance side as well. So penetration of the insurance in the India is also not to the peak level. अभी भी बहुत सारे मतलब गांव है इंडिया में, बहुत बड़ा है इंडिया, टायर 2 टायर 3 cities में 100% लोग अभी इंश्योर्ड नहीं है. So insurance sectors is going to be a boost, and I think government wanted to do that as well by removing the GST out of it. मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अपना इंश्योरेंस करे, the government ये चाहती है. और गवर्नमेंट ये चाहती है, एंड गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे दिन बढ़ते जाए तो लोग इंश्योरेंस करें. और सीनियर सिटीजन के लिए दिस प्लान आई लव इट, कि सीनियर सिटीजन के लिए नो GST होगा, तो इसका असर इनके प्रॉफिटेबिलिटी में होगा. तो आप बोलोगे क्यों होगा? क्योंकि अगर जितना ज्यादा GST नहीं होगा तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो चीजें सस्ती हो जाएंगी तो आपके प्रीमियम जो है वो सस्ते हो जाएंगे, और जितने आपके प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे, तो जैसे ही आपके प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे, तो आई थिंक दैट देयर विल बी अ मोर बाइंग डिमांड फ्रॉम द कस्टमर्स टू दीज कंपनीज लाइक मैक्स फाइनेंशियल. मैक्स फाइनेंशियल इज वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस in India actually at this moment in time, along with the ICICI Lombard. So you can have a look into these two companies. There is no buy and sell recommendation, but I think if you want to earn the money, मतलब आपको अगर पैसे बनाने हैं शेयर मार्केट में, तो you will be earning the money through these all GSTs, or like you can earn the money through studying all these
माइक्रो डेटा जैसे इंडिया में चेंज हो रहा है, जैसे इन्फ्लेशन किसके लेवल पे ऊपर है, जीडीपी क्या लेवल के ऊपर है, गवर्नमेंट जीएसटी के ऊपर क्या करना चाहती है, आप अगर इन तीनों को समझोगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड टू विच सेक्टर आई शुड गो इन फॉर द 1 or 2 years। जैसे गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर में हम पेनिट्रेशन ज्यादा करना चाहते हैं, इसका इम्पैक्ट एलआईसी जैसी कंपनी को भी होगा, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जो इंडिया में बहुत तादाद से बढ़ रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा होगा। हाँ, हालांकि आईटीसी जो चला है इतने समय से तो उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जीएसटी बढ़ेगा उन सारी चीजों के ऊपर। और मुझे लगता है टोबैको एक ऐसा स्पेस है, गवर्नमेंट चाहते हुए 100% भी टैक्स इसमें जीएसटी कर दे तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, बिकॉज जब मैंने देखा तो 5% की जीएसटी लगती थी, मतलब 4-5 साल, 7-8 साल पहले, अभी जाके 35% के ऊपर हो गई है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड लाइक, एंड इट इज दैट्स व्हाई इट इज वेरी difficult to earn the money in the companies like ITC, where most of its dependency, I think the regulation is in the hands of the government of India। जब चाहे वो गवर्नमेंट उस चीज को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, और स्टॉक में इसके ऊपर असर आता है। इंडिया में 4500 स्टॉक लिस्टेड है। व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स वेयर देयर इज अ हाई फ्लो ऑफ द न्यूज? I was surprised with the drink segment. I'm okay with, I think, the tobacco segment, but the drink segment में जो आप कर रहे हो, मतलब I think ये जो पेप्सी है, कोका कोला है, इसके ऊपर आप जीएसटी बढ़ा सकते हो, विच आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाई दे वांट टू डू इट, because I think it's a consumer boost companies like the United Spirit, United Beverage, Varun Beverages, they are doing fantastically well, and now there is a GST, obviously there will be the impact, but you can also consider वरुण बेवरेज का बहुत ज्यादा बिजनेस वो इंडिया के बाहर से भी आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी आता है। अभी इंडिया में दे हैव रीच्ड टू अ लेवल ऑफ लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन अभी थोड़ा बहुत रह गया होगा, they are trying just product mix। So it will be interesting to see how Varun Beverage react all to this GST, because this will, you will see in the Q3 con call, there will be a lot of questions. It is interesting for me to read about the con calls about these beverage companies where the GST is going to increase and if it stand। And obviously the shoes companies, बाटा बहुत ही बुरा कर रहा है, मेट्रो ब्रांड्स बहुत ही बुरा कर रहे हैं, लेकिन with this GST hikes, this will impact also the luxury items like the shoes and all these areas in a way, and we will have to see। एंड क्लोथ्स के ऊपर तो बढ़ ही रहा है, लग्जरी आइटम, इथॉस करके एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो लग्जरी वॉचेस का काम करती है इंडिया में, एंड दे हैव बीन डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। मेनी पीपल हैव saw on the Twitter and invested onto these kind of stocks, but now you can see the impact in GST is going to hamper in the growth trajectory. So we'll have to wait and see how the growth trajectory will impact with this GST decision. Obviously, the final decision of the GST is going to be on the 21st December, so we will have the final confirmation about this one's going forward. So I've tried my best, like, to give you this impact on the different companies, the GST hikes which the government is trying to play, and its impact on this GDP and the inflation. So all कुल मिला के आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ, these are the change happening at the micro level. What should I keep a stock on my radar to have a more benefits on this one? The stocks which I mentioned in this video are no any buy and sell recommendations. You can have your own studies and consult your financial advisors. If you like my videos, then please share, like, and subscribe to this channel. And if you have any comments on one of my any of the stocks, then I'll try to help you out for just analytical purposes. And if you would like me to make a video on certain stocks, then please let us know. I'll be happy to make them going forward. And that's it from my side for today's video. Thank you very much for watching, and have a nice day, guys. Thank you very much.